कोर्स की बात किया जाए AUGC code for one amino acid is 4 minus 1. 4 amino acid can be coded when they make doublet होगा 4 का स्क्वायर होगा तो 16 अमीनो एसिड कोड करेंगे कैन बी कॉल करेंगे स्टील एंड 20 when they make triple when they make triplet होगा 4 की 3 यहाँ जाएगा 64 codon can be create 200 and except codon different amino acid हो जाएगा so 3 are stop codon that is terminates and translation UAA UAA UGA and UAG UAA UGA UAG कोड पर ये होगा there are 61 codon and only 20 amino acid code करेगा it is very evident that is one codon and code for one amino acid एक codon एक amino acid को कोड करेगा कॉल करेंगे degeneracy
and other scientific work पर Govind Rana suggested by suggest that the different RNA in homopolymer contain same the nitrogenous base through and copolymer made of different nitrogenous base. कहते हैं हरगोविंद खुराना आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। जेनेटिक्स की तैयारी हो रही है। जेनेटिक्स में जेनेटिक कोड पढ़ रहे हैं। जेनेटिक कोड एक सेकेंड। जेनेटिक कोड्स पढ़ रहे हैं। इसमें हरगोविंद खुराना सिंथेसाइज different RNA homopolymer contain same nitrogenous base through and copolymer made of different nitrogenous base and मार्शल निगरवाल ने डेवलप किया था सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस RNA synthesis by a Corona sir can be converted into protein. Understand which codon has made which is amino acid. And Severio Oza ने डिस्कवर किया था polynucleotide phosphorus that can be made in RNA template independent mRNA. We can make the sequence we want, no template needed होगा। Purana synthesized different mRNA homopolymer contain the same nitrogenous base through and copolymer and made a different nitrogenous base. Marshall Nirenberg developed cell-free system for protein synthesis के लिए mRNA synthesis by the Purana cell can be converted into protein to understand which codon has which amino acid को सेवेरियोका ने डिस्कवर किया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोग्लिसरॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोसरल and phosphorus that can make RNA template independent manner. We can make the sequence we want, no template needed. Second letter, first letter. Silent feature UAA UAC tyrosine stop codon में आएगा। UAA is a stop codon for UAA check filter
मेथियोनिन वाइलिन कोड करेगा। वाइलिन कोड करने के लिए AUG मेथियोनिन थ्रियोनिन वाइलिन कोड करेगा। GUG वाइलिन कोड करेगा। GU ये वाइलिन कोड करेगा। GU वाइलिन कोड करेगा। वाइलिन कोड करेगा ग्लाइसिन GU U GG 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 जी ग्लाइसिन यूज़ करेगा। ग्लाइसिन यूज़ करेगा। स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन में आएगा UGC UGG स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन में आ जाएगा। साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। साइलेंट फीचर क्या है जेनेटिक कोड का? दे आर ट्रिपलेट होगा। जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट एंड वन कोडान कैन कोड करेगा फॉर ओनली वन अमीनो एसिड को। एक कोडान एक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। यह अनएम्बिगियस होगा। क्या होगा? अनएम्बिगियस। देयर आर degenerator. They are commonless, separate by known function, and AUG is a initiator codon. AUG is initiator codon. Initiator codon. It also code for is it also code for methionine. Initiate codon in prokaryote is methionine हो जाएगा। नंबर 6 UAA UGA and UAGR stop codon stop codon stop codon होगा nonsense on that do not code for any amino acid. UAA, UGA and UAG are stop codon. UAA, UGA stop codon nonsense codon that do not नहीं code करेगा for any amino acid. Genetic code are nearly universal. U code for phenylalanine in bacteria. UU code करेगा phenylalanine. UU code for phenylalanine bacteria. phenylalanine को UU code करेगा bacteria. Some expansion occur in mitochondria, protozoa and code. Some कुछ एक्सेप्शन है जो पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोजोआ एंड कोड में। They are not overlapping. They are not overlapping. They are not overlapping. One second, guys.
कैटालिटिक रोल होगा 20s आरआरएनए वर्क करेगा राइबोसोम में, राइबोसोम में। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए या एसआरआरएनए सॉल्युबल आरएनए। द रीड करेगा जेनेटिक कोड ऑन द रीड जेनेटिक कोड mRNA and during its specific amino acid for protein synthesis. They work as they work as adapter work करेगा। ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर है 3। सीरीन होगा, टीआरएनए होगा, एंटीकोडॉन लूप हो गया, यूसीए एयूजी इज अ कोडॉन हो जाएगा, स्टॉप कोडॉन, यूएसी एंटीकोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन कैन आइडेंटिफाई करेगा, रीड द कोड एंड ब्रिंग रिलेवेंट अमीनो एसिड। 5 से 3 डायरेक्शन जाएंगे कोडॉन। mRNA होगा, कोड करेगा, स्पेसिफिक mRNA होगा और स्पेसिफिक अमीनो एसिड हो जाएगा। टीआरएनए में 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर look like color leaf and model given by Holly and in 3D due to the hydrogen bonding it look like L shape। स्टॉप कोडॉन डू नॉट नहीं कोड करेगा फॉर एनीथिंग किसी को, डू नॉट हैव एनी टीआरएनए को नॉट कोड करेगा स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन वर्किंग की बात करें, द एंटीकोडॉन लूप ऑफ टीआरएनए द एंटीकोडॉन लूप ऑफ टीआरएनए रीड द कोडॉन ऑन mRNA specific amino acid from cytoplasm attached to 3' pair of tRNA called कहेंगे amino acid acceptor and contain specific होगा, sequence 3' pair होगा, correct amino acid is attached to the tRNA, correct amino attach tRNA से अटैच होगा, टीआरएनए एंड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम करेगा अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए, जो अमीनो एसिटाइल टीआरएनए या चार्ज टीआरएनए होगा। स्टेप इन ट्रांसलेशन का स्टेप बताना है। ट्रांसलेशन इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म में होगा। टेक प्लेस कहाँ होगा? ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम आर प्रेजेंट होगा इन साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में, इसलिए साइटोप्लाज्म में होगा। साइटोप्लाज्म में होगा। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप है। इनिशिएशन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड, इनिशिएशन फॉर्मेशन होगा पेप्टाइड बॉन्ड का, जो नीड होगी एनर्जी, पेप्टाइड बॉन्ड नीड एनर्जी। टीआरएनए आर चार्ज इनिशियली, जो टीआरएनए इधर चार्ज होगा इनिशियली बाय द अमीनो एसिटाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंड यूटिलाइज एटीपी स्मॉलर सबमिट ऑफ राइबोसोम attached to mRNA template mRNA template. This is small subunit cell, large subunit cell of ribosome with help of the magnesium ion to make initiation complex. Now this complete ribosome move from 5 से 3 direction on mRNA read it code करेगा making protein। Large subunit ribosome has seen 3 sites। A साइट एक्सेप्टर होगा, अमीनो एसिटाइल साइट होगा, ये साइट एक्सेप्टर अमीनो एसिटाइल साइट, चार्ज टीडीएनए बाइंड एट द दिस प्लेस
पी साइड जो होगा राइट साइड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा अगर इन ऑन द साइड, एंड ई साइड इलोंगेशन, ई साइड इम्पटे आरएनए टेक एग्जिस्ट फ्रॉम दिस प्लेस करेगा। Initiation formation of peptide bond need energy. tRNA are charged initial by amino acid tRNA synthesis and utilize ATP. Smaller subunit of ribosome attached to RNA template. This small subunit cell large subunit of ribosome with help of magnesium ion to make initiation complex. Now this complete ribosome move from 5 to 3 direction on mRNA, reading it code, making protein. Large subunit of ribosome has three sites. A site acceptor amino acid charge tRNA bind is this P site peptide होगा formation occur in this site. E site is exit site. Empty tRNA exist from this place. Elongation. This elongation. Initiation elongation. Transfer RNA amino acid to the tRNA corresponding to the next codon. Ribosome the move to जो ribosome होगा the move करेगा to the next codon on mRNA in 5 to 3 direction creating one amino acid chain one amino acid tRNA elongation propagation A site P site E site A site B site peptide bond formation यहाँ होगा peptide bond बन जाएगा। टर्मिनेशन की बात करें इट अकर व्हेन जब ए साइट ऑफ mRNA encounter only step codon only one codon lead to the this lead to the dissociation of ribosomal subunit and polypeptide protein is also released. Is regulation of gene expression क्या कहता है in prokaryotes there is no in prokaryote there is no compartmentalization and transcription translation can take place together in some compartment and there are post transcriptional processing is not needed as the and introns are absent. Main regulation is prokaryote. Main regulation is prokaryote take place at the time of the transcription. At the time of transcription in eukaryote, regulation take place at the multiple levels. Levels की बात करें at the time of transcription, at the time of transcription, at the time of processing hnRNA to mRNA, at the time of transporting mRNA from nucleus to cytoplasm from translation, at the time of the translation, monocystonic and polycystonic arrangement, monocystonic polycystonic arrangement. सिंगल की बात करें सिंगल पीस ऑफ डीएनए दैट मेक बनाएगा फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड दिस अरेंजमेंट इज सीन इस यूकैरियोट में मोनो मोनो मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट में देखने को मिलेगा एंड वन प्रमोटर ऑपरेटर
वन प्रमोटर ऑपरेटर कंट्रोल करेगा एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल जीन ओनली। प्रमोटर ऑपरेटर कंट्रोल सिंगल जीन ओनली। वन बल्ब लाइट अप बाई ऑन स्विच। वन बल्ब होगा, लाइट स्विच एंड ऑन होगा, स्विच एंड ऑन एंड ऑफ। पॉलीसिस्टोनिक मीनिंग होगा, सीन प्रोकैरियोट में देखने को मिलेगा। वन प्रोमोटर ऑपरेटर लीड करेगा एक्सप्रेशन ऑफ मेनी जीन को, केवल एक जीन को प्रमोटर रेगुलेटर कर रहा है इसमें। पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट, मेनी सीन। वन प्रमोटर ऑपरेटर लीड टू एक्सप्रेशन ऑफ मेनी, इसका मतलब होगा एक प्रमोटर एंड एक ऑपरेटर, मेनी मतलब बहुत सारे जीन को रेगुलेट करेंगे, इसमें एक ही जीन को रेगुलेट करेंगे प्रमोटर। वन जैसे स्विच कैन टर्न ऑन वेरियस स्मॉल स्मॉल बल्ब हो गए, वेयर लाइट इन यूज इन दिवालीज में, तो अलग अलग हुआ। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ओपेरॉन कॉन्सेप्ट एन अरेंजमेंट वेयर, जहाँ कॉमन प्रमोटर होगा एंड ऑपरेटर होगा, प्रमोटर एंड ऑपरेटर होगा, एक्सप्रेस करेगा मल्टीपल जीन्स यूजुअली रिलेट टू द सेम pathway and lactose like operon valine वेल को करेगा, एंड अर्बिनोज ए आर को करेगा, एंड ट्रिप्टोफान टी आर पी को करेगा, हिस्टीडीन एच ई ए, ओपेरॉन हो जाएगा। लाइक ओपेरॉन विच हैज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, लाइक ओपेरॉन इज विच फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनिशिएटर एंड रिप्रेसर होगा, और इनिशिएटर का या रिप्रेसर का हो, बाइंड होगा ऑपरेटर से इनिशिएटर आर आर ओ। स्ट्रक्चरल जीन होगा, स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई ए होगा, ऑपरेटर होगा, यहाँ पर मोटर होगा जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। स्ट्रक्चरल जीन में आएगा वाई जीन, बीटा गैलेक्टोसाइड, जेड जीन इज अ बीटा गैलेक्टोसाइड एंड वाई जीन परमीज एंड ए जीन ट्रांसएसिटाइलेज, इंक्रीज करेगा एक्टिविटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड्स एंड परमीज, एंड ब्रेक करेगा लैक्टोज इनटू ग्लूकोज, लैक्टोज, एंड इंक्रीज करेगा परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर लैक्टोज टू सेंटर्स। ए मिनिमम expression of minimum expression of permease is always need over to let lactose enter the cell, and regulation in lactoperon is called negative regulation, as it is regulated by an initiator and repressor। negatively charged nature का है, कहा जाएगा लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन Lycoperon is a inducible operon, can be induced activated, as it is usually seen in off state due to actively actively a repressor. but when when lactose is present, the enzyme need to be break need to be break. Lactose are also to be moved. Lactose are also to be moved. Lactose itself act as lactose itself act as an inducer for lycopyrrole। lycopyrrole promoter हो गया and for repressor, ये इनहिबिटर या रिप्रेशर, प्रमोटर इनहिबिटर प्रमोटर, ये रिप्रेशर एमआरएनए लगा हुआ है, यहाँ ऑपरेटर लगा हुआ है, प्रमोटर फॉर प्रमोटर में होगा जेड वाई ए, स्ट्रक्चरल जीन होगा प्रमोटर में इन केस ऑफ
प्रेजेंट होगा। This that is 1000 पेज ईच टू स्टोर किया गया डाटा आवर इन वन सेल में। यार जहाँ सीक्वेंसिंग और पेज सपोर्ट्स $3 टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट $90 मिलियन। $90 मिलियन लग गया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH देखा। वेलकम वेलकम ट्रस्ट यूके ने। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम जापान का, चाइना का, जर्मनी का, फ्रांस है। एंड कम टू फाउंड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था? रिजल्ट ऑफ केमिकल गोल क्या था? आइडेंटिफाई करना सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को। अब 3.3 गुणे से हेप्लॉइड बेस पेयर को। एंड मैपिंग करना ऑल द जीन इन ह्यूमन जीनोम को। या ह्यूमन जीनोम कंटेन करेगा 3.164 बिलियन बेस, नॉट 3.3 बेस बिलियन। 3.164 आइडेंटिफाई करना एंड एस्टिमेटेड जीन इन ह्यूमन जीनोम 20,000 से 25,000 तक। टोटल नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन जीनोम आर अराउंड 30,000। एवरेज साइज ऑफ जीनोम इज अराउंड 30,000 बेस पेयर। लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन, कंटेन करेगा 2.4 मिलियन बेस पेयर। स्टार्ट स्टोर दिस इंफॉर्मेशन store this information in form of computer and databases for better analysis and retrieval, and when need it form the basis of new branch of biology bioinformation. क्रोमोसोम नंबर 1 has most gene। क्रोमोसोम नंबर 1 पे
होस्ट जीन होगा 29 जीन, एंड वाई क्रोमोसोम हैज लीस्ट होगा 231 जीन होगा। 2% जीन कोड करेगा प्रोटीन को, 99.9 कोड करेगा डीएनए सीक्वेंस आर आइडेंटिकल होंगे इन ऑल सेल ह्यूमन में। दैट 0.1% सीक्वेंस दैट इज मेक डिफरेंट, 0.1 अलग होगा, अलग 90.9% सेम। ह्यूमन जीनोम डीएनए सेम होगा। फंक्शन ऑफ 50% डिस्कवर जीन आर अननोन होगा। Transfer the related technology and data to various sectors like pharma, agriculture, for bacteria, better USA. Repetitive DNA, junk DNA, like as a major part of our DNA. They have no direct coding function, but they help in maintenance of chromosome structure, maintaining dynamics by having mutation and helping evaluations. Address the address the IELTS issue, ethical ELSI issue, ethical legal social issue, ethical legal social issue that may area during the project. About 1.4 million locations are present in our DNA where जहाँ single base pair DNA different occurrence called single SNP single nucleotide in polymerization. And approach using human genome project approach क्या है? एक्सप्रेस करना सीक्वेंस को, टैग करना, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग करना, ओनली द डीएनए पार्ट दैट कैन एक्सप्रेस करेगा इटसेल्फ मेक बनाएगा आरएनए एक्सॉन और सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन फुल जीनोम सीक्वेंसिंग हेयर कंप्लीट जीनोम होगा। कंप्लीट जीनोम इस सीक्वेंस एल जीन where जहाँ अलॉट होगा at allot a tag of its position and function. Step in genome sequencing: isolate total DNA from a cell and converted this DNA into a random fragment by restriction endonuclease enzyme. Fragment area sequencing and automated sequencing using sugar method. Clone them in suitable host like yeast artificial chromosome, bacteria artificial chromosome for the amplification के लिए। Sequencing और arrange होगा based on the overlapping genomes region पे present in them, and alignment of sequence based on the complementary programs to uh, generate करेगा complete strands. If such single DNA base pair occur in 6% population का, it SNP single strand not in disease. such change are called करेंगे mutation. if the radius जो radius होगा 0.1% population का हो जाएगा में case in disease. DNA fingerprinting, DNA profiling. DNA fingerprinting क्या है? by डेवलप बाई किसने किया था? एलेक्स जेफरी ने। एलेक्स जेफरी दिए थे 1986 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एलेक्स जेफरी यूज इन क्राइम, क्राइम को, इन्वेस्टिगेशन को, एंड नर्सिटी को, कंफर्मेशन को, एंड फॉरेंसिक एप्लीकेशन के लिए दिए थे एलेक्स जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 99% डीएनए ऑल इन ह्यूमन इज सेम, 0.1% डिफरेंट मेक अस डिफरेंट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यूज करेंगे हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंट का एंड सैटेलाइट
DNA. There are repetitive sequence, non-coding, so higher degree of polymorphism and inheritable host करेगा to next generation. When जहाँ our complete DNA is centrifuge करेगा, centrifuge the DNA make one larger peak of bulk DNA and smaller peak of relative DNA. मेन डीएनए होगा, यहाँ रिपीटेटिव डीएनए होगा, सैटेलाइट डीएनए विच कैन बी एसटीआर, शॉर्ट टेंडेंस रिपीटेटिव हो जाएगा, शॉर्ट टेंडम रिपीटेट, शॉर्ट टेंडम रिपीटेट हो जाएगा, वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट होगा, माइक्रो सैटेलाइट मिनी सैटेलाइट वीएनटीआर मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट एसटीआर शॉर्ट टेंडन रिपीट, वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट 10 से 60 बेस पेयर लॉन्ग होगा, 100 से 1000 रिपीटेड्स होंगे, साइज 0.1 से 20 केबी का होगा, ह्यूमन ए में 12 रिपीट होगा, ह्यूमन बी में 79 रिपीट्स होगा। ठीक है, शॉर्ट टेंडन रिपीट माइक्रो वाला, मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट मिनी, बात करते हैं 2 से 6 बेस लॉन्ग होगा, 5 से 20 रिपीटेड्स होगा, साइज की बात करें 10 साइज 10 नैनो बेस होगा, 0.1 किलो बेस या this number of repeated are variable in different human make babies of DNA fingerprintings and step in DNA fingerprinting isolation of DNA from isolation of DNA from any cells or blood stain semen stain our hair roots step in step in DNA fingerprinting नंबर एक आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एनी सेल ब्लड स्टेनिंग सीमेंट से हेयर के रूट से कहीं से भी आइसोलेशन करो डीएनए को। नंबर दो एम्प्लीफिकेशन, नंबर तीन सेपरेशन, नंबर चार डाइजेशन, नंबर पाँच एल्कली एनएओएच सिंगल स्टेट, नंबर छः ट्रांसफेरिंग सदन ब्लॉटिंग एंड आठ मेंबर इज वॉश टू रिमूव वन ब्रांच साथ इमेज बनाएगा ऑप्टेन इज लाइट एंड डार्क बैंड इस कॉल करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। या नंबर वन आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। नंबर टू एम्प्लीफिकेशन, नंबर थ्री डाइजेशन, नंबर चार सेपरेशन, नंबर पाँच यूज अल्कली NaOH, नंबर छः साधन बॉटिंग सदन ब्लूटिंग होगा, सदन ब्लूटिंग नंबर सात फेस द इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन इन solution containing a radionuclide snRNA ssRNA कलेक्ट कॉल कहेंगे, प्रोब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को प्रोब कहेंगे। नंबर नौ आठ मेम्ब्रेन इज washed
करेंगे, टू रिमूव करेंगे अनबाउंड प्रोब्स को रिमूव करेंगे एंड नंबर 9 आई वुड brainized DNA is photographed on X-ray film by auto radiography कर लेंगे radiography the image obtained as light and dark band is called DNA fingerprinting. This chapter is finish microbes. Finish the chapter. Bye bye.